think it's true. He's mainly doing well because of Salman Khan. He's the star, right? लेकिन अगर गॉड फॉरबिड नहीं करती अच्छा तो ब्लेम राइटर पे भी जाता है, क्योंकि लोग सलमान को नहीं कहते कुछ, क्योंकि वो हीरा है. हमारा काम हीरे को पॉलिश करना है. लोग बोलते हैं यार तुम सलमान के साथ पिक्चर नहीं चला पाए, तुमसे बड़े गधा कोई नहीं आया. Which is fact. So I would have taken responsibility. Yes, Hello didn't work. I take responsibility. जबकि मैंने नहीं बनाई थी पिक्चर और जिस बुक पे बनी थी वो बुक हिट थी, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई. I take responsibility because then only I'll learn, right? Successful people keep learning. कुछ गड़बड़ हो गई, चलो यार सीख लिया कुछ. Unsuccessful people find reasons to quit. कि चलो quit. Successful people don't make excuses. No excuse. Excuses नहीं करना कभी लाइफ में. गलती हो गई हो गई. Excuses nobody likes, right? Blame others. Unsuccessful people blame others. You know, ये पता है क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ये हो गया, मेरी लाइफ में ये हो रहा था. No excuse. Successful people strive every day. ये एक बहुत गलत फहमी है कि सक्सेसफुल लोग रोज काम नहीं करते, क्योंकि वो तो मेड इट है, उनका तो हो गया लाइफ. सक्सेसफुल लोग रोज काम करते हैं और यही फर्क है, राइट? एंड दे डोंट क्विट. बस दैट्स इट. सो इफ यू कैन डू दिस, इट्स अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, बट इफ यू कैन डू दिस द बेस्ट ऑफ यू विल कम आउट. हर आदमी का एक अच्छा रूप होता है, एक खराब रूप होता है. आपका बेस्ट रूप बाहर निकल के आएगा और आप भी हैरान हो जाओगे, अरे मैं ये कर सकता था, मुझे नहीं पता था. सो आई होप my words are somewhere down the line helpful to you, and I wish you all the best. Enjoy your life in college. These days don't come back, but also get focused, because it's time to really make a difference, you know, become something in life. Thank you. If we have some time for that. Sir, this is regarding your books. I have read through your book, which is a non-fictional book. I have seen one thing. You are very bold in making some statements, which really surprises me, because people are very careful when they please have a seat, sir. Yeah. They are very careful when they express something. You are very bold. I like that quality in you, sir. How do you manage to do that? Well, I'm also a little bit careful when I say statements. In the sense, I will not make very direct personal attacks. I will not say things about people which are in bad taste, or I try not to. But at the same time, I don't have a when you don't have anything to fear, or when you don't want anything from someone. So I think you're talking of some of the political statements I've made, which are bold. Exactly. Because I don't want anything from them, and I know that people are with me, so I try to do it. And I normally will attack the policies. I will not attack the person. So even if like for example, Arvind is a friend of mine, and he's an IITian also, and I know what his spirit is. But if some of his policies are bad, I think I am doing a service to him by telling him that they are bad. Because चमचा बनना बहुत आसान है, लेकिन to tell him that. So I think somewhere down the line, at least what I have seen, the political class values my opinion. उनको ये लगता नहीं है कि he's just saying it. They feel कि they may feel कि I'm wrong sometimes. They may feel कि नहीं आप गलत सोच रहे हो. But I don't think they think of me as कि he's a threat or anything, or they feel कि ठीक है वो अपना कोशिश कर रहा है कहने का, and he's trying to be constructive. Even in the boldness, I try to be constructive. I think that is the difference. Yeah, and the reason, all the more reason that you are the youth icon, sir. नहीं, thank you. But my mother does say मत बोला करो ज़्यादा. Thank you. Excuse me, sir. I have a little bit query. Sir, in your profession or whatever the profession the people are having right now,
corporates. But you have to realize कि कई लोग कहते हैं कि मैं काम करूँगा, काम में सफल होऊंगा और फिर मैं खुश होऊंगा, you know. एंड अगर मैं खुश होऊंगा फिर मैं अपनी फिटनेस करूँगा, फिर मैं अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान दूंगा. सो दैट इज द सीक्वेंस दे अप्लाई एंड देन दे बिकम वर्कोहॉलिक्स. और वो काम इतना उन्हें कंज्यूम कर लेता है कि वो आगे कर नहीं पाते. Someone told me this theory opposite and I feel that works better. I feel if you are fit, if you are happy, then when you come to office you do a better job. तो पहले अपने आप को खुश रखो, पहले बैलेंस रखो और फिर वर्क करो. Don't make it work-life balance, make it life-work balance. I often say, make your life okay. If your life is not okay, आप काम पे okay नहीं रहोगे. And then ना फिर work रहेगा ना life रहेगा. So certain things don't compromise. Your health, your relationships, your sleep should not be compromised. I feel इसके बिना is very difficult to really enjoy anything in life, and that work is also not going to be good. So don't do a job which is that busy, or just talk to people, say कि इससे मेरा. So these things are, you have to give your health, relationships a lot of importance, I think, especially as you become older, because then health deteriorates quite fast. Thank you, sir. सर आपने जो रिवॉल्यूशन 2020 लिखी थी सर, उसकी एंडिंग हैप्पी एंडिंग क्यों नहीं है? Well, everybody has not read the book, so I don't want to reveal the ending. But in some ways वो happy ending है, क्योंकि उसको वो जो लड़की थी वो गलत रीजन से ले रहा था, सिर्फ राघव को नीचा दिखाने के लिए. करेक्ट? सिर्फ दिखाने के लिए मैं कर सकता हूँ, आज मैं कुछ बन गया हूँ. और जो बनते बनते उसकी कॉन्शियंस इतनी खराब हो गई थी कि फाइनली उसकी कॉन्शियंस जागी. सो टू मी ही बिकेम अ हीरो इन द एंड. अगर वो ले लेता उसको भी तो शायद वो आपको हैप्पी ना लगती है. कहीं ना कहीं आपको लगता कि ये इसको मिल तो गई लड़की, लेकिन ये इंसान नहीं बदला, ये करप्ट हो गया. उसके एक सैक्रिफाइस से उसके सारे पाप माफ हो गए. सो फॉर मी इट वॉज अ हैप्पी एंडिंग. फॉर मी इट वॉज अ अवेकनिंग इन हिम कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ. हालांकि उसे बुरा लगा, इमोशनली ही फेल्ट मिजरेबल ऑन लीविंग द गर्ल, बट एट अ fundamental level he was proud of. He did something which he has never done. He was always weak. Whenever there was an option to be corrupt, he took the corrupt option. He took the corrupt option. Always, always, always. In the end, finally he felt, nahi yaar. When he sees Raghav doing so much good work, he says, yaar, he deserves her. Uska man nahi mana. So I feel that there was hope for him. He became a good person. I think becoming a good person is better than getting your girlfriend, I feel. Thank you. Will you write more screenplays after Kick? Not very keen right now. Offers are coming, but obviously because it's a big hit. But I like books. I like books पे बना लो films, वो better है मेरे लिए भी. And I like writing new stories. Films are, there are very complicated reasons, but there's too much consultation required. And I'm used to writing books, अपनी stories. Whereas in films they are very slow. Because पहले director okay करेगा, फिर और writer रहेंगे, dialogue वाला रहेगा, ऐसे. Just in fact whatever you write, जो बन के आता है वो it's like आधा ही बन के आता है. मतलब आप सब्जियां काट के सब कुछ देते हो किचन में, पर जो सब्जी बन के आती है उसमें आधी फेंक दिया उन्होंने. So and उनकी चॉइस है, वो उनकी फिल्म है, उनका मन है जैसे. तो वो सेटिस्फैक्शन इतना नहीं आता है जितना मुझे बुक्स में मिलता है. I have the choice, so I'll prefer books, but I'll do one screenplay between books maybe. So why you opted Salman Khan? I didn't opt यार, उन्होंने बुलाया. I didn't, ऐसा not like I didn't. But he is a very, like I told you, I was attracted to the project because he's the most popular. Like मैं जहाँ भी गया हूँ इंडिया में, इतना मैंने ट्रैवल किया है, आप गांव में भी जाओगे, गांव के भी छोटे से छोटे बच्चे को सलमान खान पता है. So that for me was a big appeal. Although they will not know कि मैंने लिखी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कभी कल जाऊँगा, मैं उनको बोल सकता हूँ कि आपने किक देखी होगी. That I did. So then they connect to me. Yes sir. जो भी आपने प्रेजेंटेशन दिया उसमें फेथ को आपने लास्ट में रखा. फेथ. हाँ, faith. हाँ. उसमें सोचा था कि सबसे पहले उसी को रखा जाए कैसे? हाँ नहीं वो भी ठीक है. ऐसे कोई मैं तो just there is no particular order. These are all important things. Faith, goal, whatever, they're all same. Yes.
Sir, you are a youth icon for so many people. Who's your real icon? Whom you get inspired with on daily situational life? You know, like someone like a Steve Jobs or Mark Zuckerberg or these young boys who have really done, like the Flipkart people, they are my juniors from IIT. And I was just telling sir कि 2008 में जब मेरी 2 States बुक आई थी तब उन्होंने स्टार्ट किया था और मेरी बुक लॉन्च थी और ये 2 छोटे छोटे लड़के आए कॉलेज ग्रेजुएट्स और बोला कि सर हमें पासेस चाहिए बुक लॉन्च के। हमने भी एक ई बुक स्टोर खोला है, हमें भी आप सारे बुक सेलर्स को बुला रहे हो यहाँ, हमें भी पास दे दो। तो हमने पूछा आपकी बुक क्या नाम है आपके साइट का, तो उन्होंने कहा फ्लिपकार्ट नाम है। 4 लाख रुपीज़ उन्होंने जमा करके कंपनी खोली थी। Yesterday the valuation was 42,000 crores. So 6 years. So yeah, मैं किताबें लिखता रह गया। Sir, will you change? But I'm happy, so it's okay. Will you change from time to time as in? Yeah, it changes, you know. I mean, I get inspired by not just my field, you know. I can be inspired by anything. You can be inspired by किसी ने एवरेस्ट क्लाइंब किया या कोई हैंडीकैप बच्चे का गूगल में जॉब लगा। For me, you know, inspiration, मोटिवेशन ऐसी चीज़ है कि आपको टाइम टू टाइम फिर से भरना पड़ता है अपना टैंक। आज आपने मेरी टॉक सुनी, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन शायद 3-4 दिन बाद आपका वो फिर डिप्लीट हो जाएगा। तो फिर कहीं ना कहीं से आपको मोटिवेटिंग स्टोरीज हमेशा पढ़ते रहनी चाहिए। इनफैक्ट बिलीव इट और नॉट, मैंने ये जैसे मैं कहता हूँ कि मोटिवेशन नहाने की तरह है। आप नहाते हो तो आप बड़े फ्रेश हो जाते हो, लेकिन अगले दिन आपको फिर से ज़रूरत पड़ती है, राइट? सेम विद मोटिवेशन। ये माइंड ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव में लेके ही जाएगा आपको। सो इसीलिए कई लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं, कई लोग प्रवचन सुनते हैं, कई लोग कुछ, आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हो, आपको भी लाइफ में कुछ बनना है तो आप मोटिवेटिंग चीज़ें जहाँ भी आपको मिलती हैं आप कर सकते हो। इनफैक्ट वी आर थिंकिंग, माई टीम इज थिंकिंग सीरियसली, आई वुड लाइक टू गेट योर थॉट्स आफ्टर द बुक, हैव माई ओन यूट्यूब चैनल ऑन मोटिवेशन। यू थिंक दैट विल वर्क? So that will be something we'll do fun and, you know, like not like a full talk but 3-minute, 4-minute quick every day on interesting things I see, because I feel if a person is motivated वो कुछ भी करता है, वो सीखता है, खुद जाके सीखता है। So that is the core of where I like to research now. What is in fact the story I have done is a love story, but it's a motivation story about a lover who is so inspirational कि मतलब when people read it they will not feel कि love story पढ़ी उनको लगेगा यार कि लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। So that's the message I'm trying to do. So yeah, just make sure you get that dose regularly from different people. Doesn't have to be one idol in life. मतलब वैसे भी डेंजरस है एक ही आइडल रखना लाइफ में, कल को कुछ हो जाए। वैसे आपने आसाराम बापू जी को रख लिया आइडल, रखते हैं भाई, अब फिर हो गया, अब आप क्या करोगे? तो इससे बेटर है 10 बार रख लो। Good afternoon, sir. I have nothing against Asaram Babu. I'm giving just a light example. Good afternoon, sir. Sir, I think India is not a country where reading is a culture as compared to Western countries now. So, आपका कोई plan या कोई strategy to change that? Because I think that is very important. Reading I'm is- trying by my own books, but also trying to do tie-ups. Like I said, this new book we have now tied up with Flipkart to release it in a big way, to come up with plans to encourage. I think online selling will really help books, because bookstores है नहीं देश भर में, and अब वो bookstore नहीं बनेंगे, अब सीधा online ही गेम जाएगी, because अभी इतना so there was a time my books, people used to buy from railway stations, because बहुत से शहर ऐसे हैं इंडिया में जहाँ bookstore ही नहीं है। So people said कि in fact यहीं से मुझे कोई Durg station से somebody said I go to buy a platform ticket, go to platform 1, buy your book and come home. I told my publisher कि ये तो हाल है, book ही नहीं available, आप क्या कर रहे हो? But luckily for us, online has come. So we are hoping that will really change the game. Already Flipkart, like compared to just 3 years ago, they are 10 times the size. From Revolution 2020 to the new book. So yeah. Hello sir. Sir, like you told that you have given 3 years to write a new book. So how do you go about it? You go from A to Z, or you whichever part you think like you write that part? I plan. Many writers do differently. I plan. I maximum 2-3 parts I'll do कि चलो अभी आगे का लिख लेता हूँ. But usually I go from start to finish. So because what I have seen is that constantly you get exposure. You're thinking Then I go back and वो
थोड़ा बहुत चलता है वो, करेक्ट, यू आर राइट, वो थोड़ा Because if you've written something and see after 6 months you feel that this could have been better, so you go and scrap the whole thing. no, there are many drafts. I do one, but what you will read is probably the 10th draft. What I have written is one draft, then और फिर editors पढ़ते So हैं. if someone is writing a book, according to you, how should he go about writing a book? There are, it's a very long discussion. But if you go on the internet and say how to begin writing a novel, you will get a lot of resources. But there are methods. There is a system in place. But like it's a book set in Bihar, so I went to Bihar for research. तो वहाँ गए, फिर बड़ी सारी चीज़ें सीखी, तो फिर वो जाके फिर वो डालनी पड़ी है.